A very good morning, all of you. So we are back with our daily current affairs sessions. In today's session, we are going to have some very important news from your exams perspective. So let's just start. So the first news that we are going to see is a very important current news, because of which there is also a lot of controversy which is going on these days. So we are going to see that what is this Agnipath scheme and how is it actually, creating a lot of controversy. What is the reason behind that? There are a lot of controversies and people are protesting, and we have also seen that a train was set on fire, one of it, so उससे बहुत ज्यादा chaos हो गया है. So उसको समझने के लिए कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों इतना कंट्रोवर्शियल ये स्कीम हो रहा है, उसके लिए हमें जरूरी है दैट वी सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट कि क्या स्कीम ऑफर करती है, क्या इसमें क्या क्या छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे ये अच्छी साबित हो सकती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, एंड देन क्या इसमें ऐसा है जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है. So the number one thing that we are going to see is that what is actually this scheme about. So yeah, give me a minute. So this Agnipath scheme is actually, under this scheme around 45,000 to 50,000 soldiers will be recruited annually. So इस scheme के अंदर कुछ लगभग 45,000 से 50,000 सोल्जर्स रिक्रूट किए जाएंगे हर साल एनुअली. ओके, एंड मोस्ट विल लीव द सर्विस इन जस्ट 4 years. So this is also one of the reasons that why there is controversy. So ये जितने भी सोल्जर्स रिक्रूट होंगे उसमें से मोस्टली जो सोल्जर्स होंगे उनको सिर्फ 4 years की सर्विस मिलेगी, मतलब सिर्फ 4 साल की नौकरी एक तरीके से होगी. So of the total annual recruits, only 20% will be allowed to continue for another 15 years and under permanent commission. तो जितने भी लोग रिक्रूट होंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 people रिक्रूट हुए हैं अगर, तो उसमें से जो 25% होंगे सिर्फ वही लोग, जो 25 लोग होंगे उन 100 लोग में से सिर्फ वही लोग होंगे जो अलाउड होंगे कंटिन्यू करने के लिए अगले 15 साल और परमानेंट जो उनकी जॉब होगी. अदरवाइज बाकी जो 75 लोग होंगे उनके लिए ये 4 साल की ही बस जॉब होगी. उसके बाद they will have to look for some other kind of job, right? The move will make the permanent force levels much leaner and will considerably reduce the defense pension bill. Okay, so this is important. Pension bill. I'll be explaining this, which has been a major concern for governments for many years. So as we know that the soldiers which are recruited, they get pension after they are retired. So इस वाली स्कीम में क्या होगा कि जो 4 years जो लोग अपनी सेवा देंगे आर्म फोर्सेस में, तो उन लोगों को फिर पेंशन जैसा कुछ नहीं मिलेगा, एंड जो साइज भी होगा वो भी कम रहेगा. तो 4 साल के लिए काम करेंगे एंड देन दे विल गो. सो गवर्नमेंट पे जो एक बड़ा पेंशन का जो बर्डन रहता है दैट विल बी डिक्रीज्ड. सो दिस इज द मेन कंसर्न, एंड जिसकी वजह से इस स्कीम को लाया जा रहा है. ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन अहेड. Okay. So now what is the eligibility criteria for this? So we are going to see the eligibility criteria for this one.
Let me just erase this. Yeah. So the eligibility criteria is of such type that the new system is only for personnel below officer ranking. So जो भी officer rank है उनके लिए ये नहीं है, but this is for the people who are below the officer rank. Okay, so those who do not join the forces commissioned office. Okay, so under the Agnipath scheme, aspirants between the age of 17.5 years and 21 years will be eligible to apply. So जो भी काफी कम age है, so we will have more youthful armed force. तो 17.5 से years से 21 years तक के जो भी eligible aspirants हैं, they are they are allowed to apply for this. Now the recruitment standards will remain the same. So अभी तक जो भी standards रहे हैं recruitment standard के कि कैसे release के through या जो भी exams वगैरह होते हैं, जो भी पूरा process होता है वो same रहेगा, उसमें कोई ऐसा change नहीं है. And this recruitment will be done twice a year. So this recruitment will take place twice a year. Okay. So wait. And there is one more information that I have brought, which is very important. That this recruitment will actually, Chalo, I will tell you this afterwards, but also we need to see this, that India has second most number of active military personnel. So India में already इतने ज़्यादा people है in this armed forces. So उसके लिए ये 4 years का किया जा रहा है कि जो it will become linear for to have that number, थोड़ा सा number reduce हो जाएगा and burden जो है वो भी कम हो जाएगा. Okay, so what is going to happen after they are selected? So this is we are going to see in detail because this is very important. So after selection, there will be a 6 months training. So जो 4 years है उसमें से there will be 6 months training, and then will be deployed for 3.5 years. So 6 महीने 4 साल में से 6 महीने की एक्चुअली ट्रेनिंग है, एंड एक्चुअल जो जॉब होगी वो सिर्फ 3.5 years की होगी. So during this period, they will get starting salary of 30,000. So salary will be starting from 30,000 along with additional benefits which will go up to 40,000 by the end of the 4th year. So initially it will start to 30,000 and then it will go to 40,000. Okay, so during this period, 30% of their salary will be set aside under a Seva Nidhi program. So this is important, Seva Nidhi program. This you need to, remember as of now. Seva Nidhi program, इसमें क्या होगा कि for example, अगर किसी की जैसे initially they will be getting 30,000 salary, तो उसमें से 30% जो होगा वो सेवा निधि प्रोग्राम में that person will go. Okay, उसमें रखा जाएगा उस अकाउंट में, सेवा निधि अकाउंट में, and the government will contribute an equal amount every month. So जितना for example अगर 9,000 रखा जा रहा है सेवा निधि में उनकी सैलरी का, तो सेम 9,000 ही गवर्नमेंट की साइड से कंट्रीब्यूशन होगा. सो टोटल इट विल बी 18, राइट? So equal amount will be contributed from government sides every single month. Okay. जैसे we have this EPF वगैरह वाली policy, वैसा ही कुछ है. And it will also occur
इंटरेस्ट। तो जो पैसा उसमें सेवा निधि में कंट्रीब्यूट होगा, जो भी जमा हो रहा होगा, उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन के हिसाब, कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट वाला पॉइंट। एंड एट द एंड ऑफ द 4-year पीरियड each soldier will get 11.71 lakh rupees। तो पूरा जब आप हिसाब लगाओगे तो इसमें कुछ उनको 11.71 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली अमाउंट मिलेगा आफ्टर 4 years। तो जब वो 4 साल के बाद अपनी सेवा छोड़ेंगे, उसके बाद उनको 11.71 लाख रुपीज मिलेंगे। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये टैक्स फ्री होगा। ये अमाउंट जो होगा 11.71 लाख रुपीज, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। However, after 4 years, only 25% of the batch will be recruited back। ये तो मैंने बता ही दिया, into the respective services। तो 4 साल के बाद सिर्फ 25% लोग ही होंगे उनमें से बचे हुए, उनको वापस से रिक्रूट किया जाएगा 15 साल के लिए आगे, और बाकी सब 4 साल के बाद उनकी सेवा खत्म। For those who are reselected, the initial 4-year period will not be considered for recruitment benefits। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लो। देखो, जो ऐसे लोग होंगे 75% जिनकी जॉब हुई 4 साल की, now they have got their 11.71 lakh and now they have to go to some other kind of jobs। अब जो 25% लोग हैं, those who are there, those who are reselected in the same job, तो जो अपना आर्म फोर्सेस में ही रहेंगे, वहीं पे अपना 15 साल या जितने भी टाइम के लिए काम करेंगे, तो उनको जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेंशन वगैरह, जो भी अदर बेनिफिट्स होंगे, तो वो सिर्फ उनको 15 साल के लिए मिलेंगे, ना कि उसमें वो 4 साल भी पुराने वाले ऐड होंगे। वो 4 साल ऐड नहीं होंगे। उन 4 साल के बाद जब वो रिक्रूट होंगे, तो सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं ईयर्स के बेसिस पे उनको रिक्रूटमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें भी थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में बताया है कि कैसे दे आर गोइंग टू, फर्स्ट ईयर में टोटल दे आर गोइंग टू हैव this 30,000 salary, and 21 they will get in their bank accounts, and 9,000 उनका सेवा निधि में contribute होगा for all the 4 years। तो सेकेंड ईयर में ऐसे करके पूरा बताया कि कितना कितना होगा। तो इन हैंड दे विल गेट 70% एंड सेवा निधि में दे विल गेट 30%, जिसमें कि गवर्नमेंट भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। जितना 30% अमाउंट होगा, उतना ही गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ओके। सो व्हेन डज द रिक्रूटमेंट बिगिन? सो दिस रिक्रूटमेंट विल बिगिन within 90 days under the scheme, which will bring all India all class। so ये all India all class, देखो इसको I'll explain। recruitment to the services, this is especially significant for the army when where the regiment system has region and caste basis, and with time that will be eliminated to allow anybody from any caste, region, class or religious background to become part of existing regiment। अब देखो, इंडिया में वी हैव आर्मी में वी हैव रेजिमेंट सिस्टम, मतलब 5 में डिवाइडेड है कि जो हेली टॉप्स का एरिया है वो अलग रेजिमेंट है, जैसे एक अलग से बिहार रेजिमेंट है, एंड देन वी हैव ऑल अदर रेजिमेंट्स। तो वो एक तरीके से बटे हुए हैं पार्ट्स में। सो विच इज ऑल्सो अ बेसिस फॉर कास्ट बेस एंड रिलीजन। तो ये मानना है कि ऑल इंडिया ऑल क्लास, तो कोई भी इंडिया के किसी भी पार्ट का सोल्जर, किसी भी क्लास का सोल्जर, किसी भी रिलीजन का सोल्जर, और एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स विल नॉट बी वी विल ट्राई टू एलिमिनेट दिस थ्रू दिस ऑल इंडिया ऑल क्लास। तो इस सबको खत्म करने के लिए वी हैव दिस initiative in this, that all India all class, ताकि कोई भी कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड किसी तरीके का
डिस्क्रिमिनेशन टाइप, लाइक कि इस एरिया में यही लोग रहेंगे या इस एरिया में यही लोग रहेंगे, वो चीज खत्म हो जाए. ओके, सो या नाउ व्हाट विल बी द बेनिफिट टू द आर्म्ड फोर्सेस. तो जैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लग रही है कि उनको लग रहा है कि कोई बेनिफिट होगा, बट लेट्स जस्ट सी व्हाट is there in the scheme. So due to the scheme, the average age of armed force will go down to 26 from 32 years in 6 to 7 years. Okay, so this is very simple. A youthful armed force will allow them to be easily trained for new technology. So zyada this we have seen that the people who are younger, they are more friendly, they are not challenged with technological advancement, whereas the older one are, although there are exceptions, but dekha jata hai ki older ones are a little bit technologically challenged. So it will increase employment opportunities, and because of these skills and experience acquired during the 4-year service, such soldiers will get employment in various fields. So ये क्या कह रहे हैं कि जो इससे employment opportunities बढ़ेंगी एक तो, and क्योंकि जब 4 साल के लिए वो उस environment में रहेंगे, वो skills develop करेंगे, एक अच्छा experience लेंगे आर्म्ड फोर्सेस में, तो उससे जो उनके स्किल्स डेवलप होंगे, जो उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे उनको दूसरे फील्ड्स में अच्छे एम्प्लॉयमेंट्स मिलने के चांसेस हैं. दिस इज व्हाट द स्कीम सेज. ओके, द गवर्नमेंट विल हेल्प रिहैबिलिटेट सोल्जर्स हु लीव द सर्विसेज आफ्टर 4 years. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल वर्क to rehabilitate these soldiers जिन्होंने जॉब 4 साल के बाद, जो 75% लोगों ने जॉब छोड़ दी है, उनके लिए ना गवर्नमेंट विल वर्क और ट्राई टू गेट देम अनदर जॉब. ओके, they will be provided with skill certificates and bridge courses. So उनके लिए ये भी स्कीम है कि कोई स्किल सर्टिफिकेट उनको मिलेंगे जो भी पोस्ट पे वो होंगे उसके अकॉर्डिंग, एंड ऑल्सो दे विल गेट certificates. Okay, now ये तो पहले जो हमने देखा था, this was benefit to the armed forces. ठीक है, also in a nutshell you can just see that it will provide a unique opportunity to the youth to serve the country. ठीक है, चलो ये देख लिया. Armed forces profile to be youthful and dynamic. Okay, attractive financial package for the Agniveer. So they are saying कि अगर once they are done with the job 4 years का, so उसके बाद they might have some good financial packages, and in fact इसके बारे में भी they might feel that it is a good package. So opportunity for Agniveers to train in the best institutions and enhance their skills and quality. So the way we have talked here, the skill certificate and bridge courses will also be allowed for this is saying. And availability of well disciplined and skilled youth with military ethos in civil service. Okay, so we have read all these. Now, the another news that we have a lot of news from the section of economy in today's analysis. So the first news that or rather the second news, but the first news from yesterday's newspaper is the reasons behind the crashing crypto market. So we all know that cryptocurrency का काफी क्रेज चल रहा था बहुत टाइम से, एंड अभी रिसेंट टाइम्स में वी आर बीन रीडिंग, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की होगी दे मस्ट बी गोइंग थ्रू इट ऑल्सो, कि जो मार्केट है वो काफी क्रैश कर गया है. जिन्होंने बड़ा बड़ा अमाउंट लगाया था, बहुत ही ज्यादा जो है पैसे गिर गए हैं. And what are the reasons behind this? This we are going to see in this particular article. Okay, so in recent times, Bitcoin and many other cryptocurrencies have been crashing since they hit in all-time high.
So जब से बढ़ा था ये 2021 में पीक पे था, एंड उसके बाद से ये काफी ज्यादा गिर गया है, काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा. यू इफ देयर इज समबडी who has invested nearby you, you must definitely ask them. So you will get a more concrete idea. Read करने से तो obviously you will get idea, but when you experience something so directly, then you experience it actually. So Bitcoin has lost more than two-thirds, so two-thirds, okay, of its value since it hit a peak in 2021. Ethereum, which is also another coin. So there are so many bitcoins that we so many cryptocurrencies that we know, Bitcoin, Ethereum, Doge, all these. Okay, Ethereum has also lost almost 80% from its peak. So 80%. So किसी ने अगर 100 रुपए का खरीदा होगा, so अभी वो 20 का ही बचा हो. So it's like that. So as a result, the overall market capitalization of cryptocurrencies has dropped under $1 trillion. So $1 trillion is 1 lakh crore for the first time since 2021. और ये जो ड्रॉप है इतना ज्यादा, ये पहली बार ही हो रहा है 21 से अब. Some people will feel that it is the right time to purchase even more cryptocurrencies, क्योंकि अभी सस्ता है, खरीद लो, and then when it will go on boom, तो बहुत benefit होगा, and some will be disturbed जिन्होंने boom पे खरीदा था and अब इतना down हो गया है. So let's just continue. The crash seems to have led to a drop in investor enthusiasm, with trading volumes in Indian cryptocurrency exchange dropping by 90% from its peak. So by Indian cryptocurrency exchange में तो 90% of drop हो गया है. Okay, so I also know it very personally. Okay, now we will just try to look at the reasons for a drop in cryptocurrency value. कि एकदम से ऐसा क्या हुआ? Because it was actually on peak. So अभी now what has happened that actually इतना ज़्यादा जो है drop आ गया है. So the first reason is the fall is in line with the fall in price of stocks and other assets as central bank such as US Federal Reserve tightened monetary policy to fight price rise. Okay. Tightened monetary policy क्या होता है? देखो अभी simple language में I'll try to make you understand this. Otherwise, in some other session when we have some important news related to tight monetary policy, I'll explain you in detail and economics terms. Simply ये समझ लो, जब market में inflation बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो central bank होती है किसी भी country की, जैसे we have RBI in our country. So वो क्या करते हैं, रेपो रेट वगैरह को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि मार्केट में पैसा कम हो. मार्केट में जब पैसा कम होगा तो लोग शॉपिंग कम करेंगे, शॉपिंग कम करेंगे तो डिमांड कम रहेगी. ओके, सो जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो महंगाई हो जाती है बहुत ज्यादा. मतलब अगर मुझे कोई चीज चाहिए, वो 10 रुपए की बिक रही है और 100 लोगों को और वो चीज चाहिए, वो 10 से बंदा दुकान वाला 12 की बेचेगा, तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी. तो जब मार्केट में पैसा ही कम होगा तो लोग शॉपिंग कम करेंगे, लोग शॉपिंग कम करेंगे तो लिमिटेड जो है महंगाई रहेगी, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, की इन्फ्लेशन को कम करने के लिए टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाए. Okay, then the use of cryptocurrency for real life transactions was low. So especially in India, कि cryptocurrency को actual transaction में, जैसे हम अपने money use करते हैं, उसके उसमें cryptocurrency का उतना ज्यादा कुछ use नहीं था, बहुत ही कम और low जो है इसकी value थी real life transaction. Now, government's efforts with respect to cryptocurrency. So we are going to definitely see in respect to the Indian government. उसके अलावा बाकी governments के भी जो important points होंगे, we'll see. Okay. So many countries have taken several steps to discourage the widespread use of cryptocurrency. So there are so many countries which are not at all interested in
द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। उसका रीजन ये भी है कि जब क्रिप्टो करेंसी ज्यादा यूज में आ जाएगी एंड रियल लाइफ ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए यूज होने लगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है या जो मेनली जो हमारा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसके कंट्रोल से फिर ये चीजें थोड़ी बाहर आ जाएंगी। जैसे अभी महंगाई होती है या इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट सॉरी द बैंक हैज द पॉलिसी टू डू टाइटनिंग ऑल दीज थिंग्स, तो वो चीजें कहीं ना कहीं बैंक के कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। While countries such as China and Russia have opted to impose outright bans, पूरा बैन एकदम, कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया उन्होंने पूरा बैन किया हुआ है क्रिप्टो करेंसीज पे। Others such as India has tried to tax and regulate them heavily. So in the budget session that we had in March, उसमें था कि 30% tax will be levy on this cryptocurrency transaction पे, ठीक है। So in India, while the government has not imposed an outright ban directly, ban तो पूरा नहीं है on cryptocurrency, the Reserve Bank of India has been quite vocal about the need for ban them completely. Ban लगाया नहीं है, but RBI is not in favor actually cryptocurrency, ठीक है। So if cryptocurrencies become widely acceptable, it would affect the control that central bank possess over the economy's money supply. So जो मैंने अभी आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोल है सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, इकोनॉमी जो भी पैसे की सप्लाई पे टाइटनिंग पॉलिसी करनी है या क्या करना है, सस्ताई करनी है, महंगाई करनी है, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर्स सेंट्रल बैंक लेती है, फिर उस पर कंट्रोल जो है बैंक का नहीं रहेगा अगर क्रिप्टो करेंसी ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस। So it would also affect the ability of governments to fund their spending by creating flash money, as citizens would then opt to switch to alternative currency. So obviously जब acceptable होगा किसी भी country में, तो people will switch to cryptocurrencies and other types of alternative currency. Okay, there is another news, as I told you initially that we have a lot of news related to economy today. So we are going to see this another very important news, which is about there is the government is thinking to link credit cards with UPI. So right, so let's just try to understand this one in a detail, because अभी UPI का तो बहुत ज्यादा फैशन है and there are so many बैंक अकाउंट्स हमारे लिंक हो जाते हैं, डेबिट कार्ड्स तो ऑलरेडी हमारे लिंक हो ही रहे हैं। Now what is this thing has to offer to us, कि credit cards को लिंक करना है यूपीआई से, and what could be the benefits and how it can help people and economy. So we will see all these things in this particular news. So the Reserve Bank of India has proposed to allow the linking of credit cards with unified payment interface, which is UPI platform. Okay. So let's just get into this. At present, the UPI facilitates transactions by linking savings current accounts through users' debit card. So you people might have used this. जो गवर्नमेंट ने अलाउड किया है प्रेजेंटली कि हम अपना जो है यूपीआई लिंक कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड से, यानी एटीएम कार्ड को यूज। ओके, सो इट इज नाउ प्रपोज टू अलाउ द लिंकिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म। ओके, सो दिस इज intended to provide additional convenience to the users and enhance the scope of digital payment. Okay, so debit card is when you have amount in your account that will be debited, and
आप कुछ भी परचेज करोगे तो अकाउंट में जो आपके पैसा है वो कट जाएगा। एंड क्रेडिट कार्ड में कैसे होता है कि फर्स्ट यू कैन परचेज एंड देन यू कैन पे ईएमआईज। तो आपके पास अगर पैसा नहीं भी है या आपके पास कुछ सेविंग्स हैं विच यू डू नॉट वांट टू यूज, अभी आपको लगता है कि नहीं मुझे सेविंग्स नहीं छूनी है बट मुझे ये चीज लेनी जरूरी है, तो यू कैन गो अहेड अगर यूपीआई और क्रेडिट कार्ड का लिंक हो जाता है। So this facility would be available after the required system development is complete. So there is a system. Obviously, we need some kind of things to be done. पूरा system develop होगा. तो ये अभी propose किया है government ने और आगे बात गई है. Now the system is being developed, and once it is developed, so उसके बाद this linkage will be provided to the people and they can then purchase their things using their credit card which is linked with their UPI. So the RBI will issue necessary instructions to NPCI separately to facilitate the change. Okay. Now what are the benefits of this provision? कि actually क्या-क्या benefits हो सकते हैं अगर हम credit card को UPI से link करते हैं? So the arrangement is expected to provide an additional avenue for payment to customers and hence enhance their convenience. Okay. So एक additional help हो जाएगी कि भाई there will be a convenience that they, as I told you, they do not need to think कि मुझे अपने savings में से निकालना पड़ेगा या I will have to wait. First I will have to have some amount in my account, and कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड का यूज भी जो है वो बढ़ा देगा बिकॉज यूपीआई से कनेक्टेड होगा तो लोग जो अभी क्रेडिट कार्ड नहीं भी लेते हैं शायद वो भी क्रेडिट कार्ड का यूज करना शुरू कर दें. So the linking of credit cards to UPI has been proposed to further deepen the reach and usage of credit card. As I explained you कि जो लोग अभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर सकते, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं यूज करते, they will also try to give it a chance and वो भी यूज करने की कोशिश करेंगे. जो यूजेज है क्रेडिट कार्ड का वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाए. It is expected to bolster transaction and acceptance at merchant sites. So merchant sites जो होती है उस पे भी कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन और एक्सेप्टेंस के लिए यूज होने की एक्सपेक्टेशंस हैं. People who generally prefer to pay by credit card so as to avail of a long payback period or loans or credit card outstanding, or who do not wish to touch their savings at the moment of purchase can pay using credit card via UPI. So जो लोग ऐसे हैं जो भाई नहीं चाहते अपनी सेविंग्स को छूना या जो नहीं चाहते कि मेरे को अभी अपना अमाउंट देना है या उनको लगता है कि ईएमआई में पे करना इज बेटर, फर्स्ट यू बाय एंड देन यू कैन पे इन ईएमआई, तो उनके लिए ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है जब क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक होगा. Okay, so the last news, maybe this is the last one, I don't know. Yeah, this is the last one. This is actually from a polities perspective. ये एक editorial था because it's an editorial. इस पे एक author है जिन्होंने अपने views दिए हैं, तो we will try to analyze it from the author's view. ठीक है, कोई personal हमारे पॉइंट्स नहीं होंगे. जो भी ऑथर ने बोला है इन द एडिटोरियल वो वही हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वन. सो बुलडोजर इनजस्टिस टू टीच अ लेसन. नाउ लेट्स ट्राई टू लुक इनटू दिस. द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट demolished the house of a political activist who has participated in the violent protest against the comments made on the Prophet Muhammad. So we all know that there are a lot of controversies going on, जिसमें कि कुछ नेता लोगों ने कोई कमेंट किया था जिस पर कुछ एक्टिविस्ट बहुत वायलेंट हो गए और काफी दंगा फसाद हो रहा है. तो उसमें एक एक्टिविस्ट ने जो पार्टिसिपेट किया था उस वायलेंट प्रोटेस्ट में, उसका जो घर था विच इज इन यूपी प्रयागराज, उसको डिमोलिश कर दिया है
यूपी गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। सो उस पे हम देख रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे डिमोलिश करने से पहले या क्या नहीं, वो सारा न्यूज है। और साथ ही जो ऑथर है उनकी थोड़ी सी अपने आइडियोलॉजिकल थिंग्स है। द क्वेश्चन ऑफ हु इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम is the one who provokes or the one who provokes. So author बड़ा अच्छा सा है ये editorial, you must read it if you get time from the newspaper also. समझ तो आप जिस यहाँ पे जाएंगे, बट इसके बाद if you get time just make sure to read it once from the newspaper, ऐसे क्योंकि जिस बेहतरीन से ये स्टार्ट हो रहा है, if you are going to write any kind of written exam you will definitely going to learn कि actually answer writing कैसे करनी है। So yeah, it's very important. So author पूछते हैं कि कौन गिल्टी होगा क्राइम कमिट करने का, वो जो कि प्रोवोक कर रहा है या वो जो प्रोवोक हो रहा। ठीक है, सो he says this has been widely debatable from ages. Okay, so now the Supreme Court of India in the law of sedition has clarified that the one who incites violence is the one who is guilty. तो जो भड़का रहा है, जो प्रोवोक कर रहा है वायलेंस को, वो गिल्टी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में in the law of sedition में क्लैरिफाई किया। However, in recent time, the provocation of the one who incites violence seems to be overlooked, and the ones who has been provoked are often being punished. So भाई ये ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में, हाल फिलहाल के टाइम में ये देखा गया है कि जो भड़काता है दंगे फसाद वायलेंस, उसको तो नजरअंदाज किया जाता है, उसको तो पनिशमेंट नहीं मिलती है, एंड जो भड़क गया है, जो एक्चुअली दंगे फसाद कर रहा है, उसको पनिशमेंट मिलती। सो दीज इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्टेड टू अरेस्ट फॉलोड बाय arbitrary demolition of their residential houses, which has been referred to as bulldozer justice. तो बुलडोजर जस्टिस बोल रहे हैं इसको कि भाई किसी ने कुछ गड़बड़ किया, कुछ अनएथिकल लगा, कुछ क्रिमिनल लगा, तो उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा, एंड दिस इज व्हाट दे आर कॉलिंग एज बुलडोजर जस्टिस। नाउ there are so many instances in this particular case where government is being criticized for demolishing that particular house of the political activist. Now, what are the reasons and what are the parameters जिसके ऊपर की government को criticize किया? So the state has questioned about how it collected tax. Actually, government ने क्या बोला कि ये जो घर है ये इलीगल एरिया पे बना हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये जो जगह है यहाँ पे दे कैन नॉट मेक अ हाउस। सो इस पे मतलब उन्होंने ये रीजन देकर कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये कहकर जो हाउस है उस पे बुलडोजर चला। ओके, सो द स्टेट हैज बीन क्वेश्चन अबाउट हाउ इट कलेक्टेड टैक्सेस फॉर सो कॉल्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन, कि भाई इतने टाइम से घर होगा, इतने सालों से आप एक इलीगल जगह पे कैसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, तो ये एक क्रिटिसिज्म हो गया। Critics also question how the illegal construction of the house was permitted, कि भाई पहले आपने उसको परमिट ही कैसे कर दिया, it is illegal, तो how did you permit कि भाई जाओ ये इलीगल जगह है घर बना लो, how did you do it the first place? Okay, what action has been taken by the state against the complicit ऑफिशियल, और जिस ऑफिशियल ने एक्चुअली ये अलाउड किया होगा, तो भाई उसके अगेंस्ट व्हाट हैव यू डन, व्हाट स्टेप्स हैव यू बीन टेकन। Then critics point out that the demolition order was pasted on the wall of the house on a Saturday night. Okay, and the demolition took place on following Sunday morning. So रात को they have pasted the demolition order on the house, बाहर, ठीक है, वॉल पे लगा दिया जहां पे भी, एंड रात को आपने लगाया, एंड सुबह यू जस्ट केम एंड demolished it. So you did not give sufficient time for the people of the house to go to the court or have try to challenge
your order, all those things. तो time तो मिलना चाहिए था. Giving no time for the individual to challenge the correctness of the demolished order in a court of law. They must have given some time ताकि वो कोर्ट में जा सकते थे, रजिस्टर कर सकते थे कि दिस इज द थिंग, बट उनको टाइम ही नहीं दिया. सैटरडे नाइट यू पुट एन order on the wall, and then Sunday morning you just come and demolish the house. So this is also one of the criticisms. The individual was not provided with an opportunity for hearing granted as per law. कि एक बार बात सुनी जानी चाहिए थी. Conventional principles required state action to be just, fair, and reasonable, and the critics believe that an opportunity should have been provided for the individual to appear for the hearing. So, the conventional principle actually कहता है कि state को justice loving होना चाहिए, just होना चाहिए, fair होना चाहिए, और कोई भी काम करने से पहले you must have some reasonable points to prove कि this is not monarchy, right? कि आप कहीं भी कुछ भी कर देंगे, एक बंदे का राज है. It's not like that. So this is what the critics are saying. So further, the house was demolished on Sunday, which is a government holiday. Okay, this is also one of the points that critics are giving. It was Sunday, which was a government holiday, and then इतनी जल्दी थी आपको कि आपने demolish कर दिया house. Okay, now there are some also recommendation which are there in the news article जो कि author के हिसाब से हैं. The state must ensure accountability and banish the culture of impurity. Experts feel that the state should compensate the individual to rebuild his house and also compensate for the mental distress caused. तो कह रहे हैं expert को जो है वो compensate करना चाहिए individual को, और extra compensation भी करना चाहिए जो mental distress create किया है. Action should be initiated against the concerned officers all the levels. जो भी officers इसमें involved हैं bulldozer justice में for this particular case, उन सबके against एक कुछ ना कुछ action लिया जाना चाहिए. The उत्तर प्रदेश State Human Rights Commission, भाई State Human Rights Commission क्या कर रहे थे? They must also be held accountable for its incompetency. क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का तो यही काम है देखना कि कहाँ इंसान का बेसिक राइट तो कहीं हनन नहीं हो रहा है उसका. So whatever they doing, the commission क्या कर रहा है? So all these things, these are the recommendations. So with this news article, we come to an end, and I will see you in the next current affairs session tomorrow. So I'll see you. Thank you so much. Okay. Bye everyone.